Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Majid, and today we will discuss the very important and very interesting conceptual question and Etea MCQs on the Gauss's law. So we have studied the Gauss's law in our previous lecture. If you remember, that was the net electric flux through any closed surface. This is the net electric flux through any closed surface is equal to total charge enclosed by that surface divided by the permittivity. In case of vacuum, it is epsilon naught. So if you have any closed surface and there is a charge Q inside this surface, then how we can find out the electric flux through this surface? That is very simple, Q by epsilon naught. So today we will use the Gauss's law, and I'm going to discuss some of the very important conceptual question on the Gauss's law. Again, some of the students have already asked many questions in the WhatsApp group or by email. So let me discuss it. Question number 1, that's very simple. A closed surface contains equal and opposite charges. The electric flux through the closed surface is. यह क्वेश्चन कुछ ईटा के पेपर्स में आया हुआ है, यही क्वेश्चन इन केस ऑफ द इंजीनियरिंग जो पेपर्स है. सो अ क्लोज सरफेस कंटेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में 2 चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट. लाइक यू हैव एनी क्लोज्ड सरफेस. It may be in the form of sphere or it may be in the form of the cube. So you have a closed surface and this surface contains equal and opposite charges. For example, one charge is plus Q, the other is minus Q. Contain 2 equal and opposite charges. Then the question is, the electric flux through the closed surface is. Electric flux क्या होगा इस closed surface से? So the idea is again very simple. The Gauss's law is this net electric flux equal to Q by epsilon naught. Q is the total charge enclosed. This is the total charge enclosed in the surface. So what would be the answer? That's very easy. The charge enclosed by this surface is, one is plus Q, the other is minus Q. So the total charge enclosed, it is 0. So this charge is 0. Here the net charge, the total charge, it is plus Q and minus Q. So that is 0. So this means the flux is 0. So the correct option is 0. So the net flux would be 0 in case of the 2 equal and opposite charges. So that's very simple. Again, for example, अगर आपके पास 2 charges है, one is, let for example it is 3Q and the other is minus Q, then what will be the answer? Then the net flux would be 3Q minus Q. So answer उस केस में आपके पास, if this is plus 3Q and this is minus Q, तो आंसर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2Q. क्लियर? सो देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. सो डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं यूजिंग द गॉसेस लॉ. इफ यू नो द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, then you can find out easily the net electric flux. So let's come to the question 2. That is, for example, if you have a cube, if a charge Q is placed at the center of a cube, you have a cube and you know cube has 6 faces. So if you have a charge Q that is placed at the center of a cube, then find out the electric flux through any face of the cube. For example, you have a cube, like this one. You have a cube shape. This is cube shape. You know this cube has 6 faces, 1 2 3 4 5 and 6.
So the cube have generally already you have studied about the cube. So this is one face, 2, 3, 4, 5, 6. So you have a charge inside the cube, and that is at the center of the cube. For example, you have any charge body, and that is here at the center. It is at the center of the cube. So what would be the flux through one face of cube? So that's again very interesting and simple question. You can find out it very easily using the Gauss's law. And what would be solution of this one? So question 2, solution. We know this thing, we know Gauss's law, the net electric flux, that is equal to Q by epsilon naught, the total charge enclosed and divided by the epsilon naught. So the total charge here, it is Q, and that is at the center of the cube. So the charge is at the center of the cube, so the flux is going out through this whole surface, that is in the form of cube. So, and cube has 6 faces. So net electric flux, this is Q by epsilon naught. So here in this case you have total 6 faces. So the electric flux through, that is the net flux, electric flux through 6 faces, that is equal to Q by epsilon naught. This is the total electric flux given by the Gauss's law. You have any shape, it's maybe sphere, it's maybe cube, or it's maybe another shape. So the net electric flux is Q by epsilon naught. मैंने डिटेल में बताया था ये क्वेश्चन क्या शो करता है. So you study the Gauss's law lecture in detail, then I hope then you can understand this thing, electric flux through the 6 spaces, that is equal to Q by epsilon naught. So what we have to find out? We have to find out the electric flux through any one phase. One phase से हमने electric flux find out करना होगा कि यहाँ से इस phase से electric flux क्या होगा. So you can easily find out this thing, the electric flux through single phase, that equal to Q divided by 6 epsilon naught. You divide it by 6. Clear? So single फेज से आपके पास फ्लक्स क्या होगा, Q डिवाइड बाय 6 epsilon naught. Clear? From all the 6 passes you have Q by epsilon naught, so just divide it by 6. So I have another question related to the question number 2, or a question again asked by one of the student, और यह क्वेश्चन Etea MCQs में भी आया हुआ है. क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल अगर चार्ज की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन इज दैट इज रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन ये है, लेट मी राइट इट सिंपली. इफ यू हैव फॉर एग्जांपल द चार्ज इज गिवन एफ Q is equal to 1 microcoulomb. This Q is given, it is 1 simple microcoulomb or Q microcoulomb. So is placed at the center of a cube of a side 0.1 meter, then the electric flux diverging from each face. क्वेश्चन वेरी सिंपल इसी तरह है, सिर्फ आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन है. क्लियर? और आपको यही बताएगी कि क्वेश्चन में आस्क जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे क्या होगा. सो यू यूज जस्ट द सिंपल फार्मूला. अगर सेंटर फॉर एग्जांपल आपके पास क्यूब है, यू हैव अ क्यूब, और क्यूब के सेंटर पे यहाँ पे चार्ज है. क्लियर? द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और चार्ज की मैग्नीट्यूड गिवन है 1 माइक्रोकूलम. तो ईच फेस पे आपके पास फ्लक्स क्या होगा, और वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया, 6 फेसेस पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट है. सो फ्लक्स थ्रू सिंगल फेस
of cube, that is equal to Q by 6 epsilon naught. So you just put the value of Q, that is 1 microcoulomb, 1 into 10 raised to the power minus 6 coulomb divided by 6 epsilon naught. So that would be the correct answer. That's very easy. Next, question 3, already I have written on the board, and that is again related with the Gauss's law and with the cube. Or this question is very interesting. We will study different cases in question 3, and यहाँ से आपका concept clear हो जाएगा. Question 3 is, what will be the total electric flux through the faces of a cube? Condition of क्या है? The same. You have a cube, clear? और अब condition different charge पे given है. The charge is placed, first one देख ले, at the corner of the cube. You have a cube, this one, and the charge is placed at the corner of the cube. So let this yellow one, I consider this yellow ball, this is the charge and it is at the corner. So again, then what will be the electric flux? Electric flux की value क्या होगी if the charge is at the middle? So you have a cube. Let me clean the board. So you have a charge Q at the corner of the cube. That this is the corner. Here you have the charge Q. This is A point. A. यहाँ पे आपके पास चार्ज Q है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Clear? So you have this cube, यहाँ पे आपके पास चार्ज है, तो total electric flux क्या होगा? Now we have to apply the Gauss's law. Gauss's law हम apply करेंगे in order to calculate the net electric flux. तो इस केस में ये चार्ज जो है, it is at the corner. इससे पहले केस में वो सेंटर पे था. So आपने इजीली फाइंड आउट किया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहाँ पे दिस चार्ज इट इज़ एट द कॉर्नर. So you have to enclose this charge. Gauss's law क्या है? The electric flux is equal to charge enclosed divided by the epsilon naught. So यहाँ पे आपने चार्ज को enclose करना होगा. So charge enclose किस तरह होगा? ये जो क्यूब होगा, ये जो चार्ज होगा, that must be equally shared by the further 8 cubes. How? Let me explain. It's very simple. This is another cube. So अगर आपने इस चार्ज को enclose करना है तो आपने एक क्यूब यहाँ पे रखना होगा. ठीक है, दो हो जाएंगे, एक यहाँ पे, क्लियर, और एक फिर इस साइड पे, 4 और 4 फिर नीचे होने चाहिए. So you must need 8 further cubes in order to enclose this charge. For example, this is at the corner. You need another cube here, clear. This is 1, another here, another. So 4 and 4 at the front faces. So you need 8 further cubes in order to enclose this charge. So the answer would be, answer क्या होगा? This charge is enclosed, equally shared in case of the 8 cube. So the net electric flux, that is the Gauss's law, that is Q by epsilon naught. So in this case, this net electric flux is equally shared by the 8 cube. So I would write it very simple. Electric flux through 8 cubes, that is equal to Q by epsilon naught. Q is the charge enclosed by these 8 cubes. So the electric flux through single cube, electric flux through single cube, that is equal to Q by 8 epsilon naught. So the correct option is this one.
क्लियर? ये क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है। अगर आपके पास एक चार्ज कॉर्नर पे हो तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करना होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इन केस दिस, अगर कॉर्नर पे हो। रिमेंबर इससे पहले सेंटर पे था तो फेस से Q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है, मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्यूब है, चार्ज कॉर्नर पे नहीं है, चार्ज इस मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। दीज आर डिफरेंट एजेस ऑफ द क्यूब। अगर चार्ज यहाँ पे मिड पॉइंट पे है B, so then what would be the value of this? So again let me draw the cube. This is the cube. Initial case was this one, A पॉइंट पे था। नेक्स्ट B अगर यहाँ पे हो, मिडल पे हो, चार्ज को आप पॉइंट B पे रखेंगे, then again what will you answer? In this case again if you have to enclose the charge, चार्ज को अगर आपने enclose करना हो, चार्ज यहाँ पे है मिडल पे, तो एक क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। This is enclosed, let for example एक क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? चार्ज यहाँ सेंटर पे, चार्ज इज here, सो एक क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, दो हो जाएंगे। क्लियर? आपने चार्ज को इनक्लोज करना होगा, सो बिलो यहाँ पे दो क्यूब आ जाएंगे, एक क्यूब यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो टोटल क्यूब्स आर 4 in this case. If the charge is at the mid or mid point of an edge of the cube, in order to enclose this charge, you need 4 cubes. Clear? So this charge is the net electric flux is equally shared among all these 4 cubes. So its answer again you can easily find out. This is A, B, the same like this thing. Electric flux through through 4 cubes equal to Q by epsilon naught. So सिंगल के लिए क्या आ जाएगा, आपने सिंगल के लिए फाइंड आउट करना है। देख, थ्रू द फेसेस ऑफ अ क्यूब, सिंगल क्यूब के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पे डिवाइड करें, फॉर सिंगल क्यूब that is Q divided by 4 epsilon naught. Clear? Next, part C, center of a face of a cube. इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 2, उस पे था सेंटर ऑफ द क्यूब। अब क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। ये फेस ऑफ द क्यूब है, दिस वन फेस ऑफ द क्यूब, और आपने चार्ज को यहाँ पे सेंटर पे रखा, ठीक है, इस फेस के सेंटर पे रखा। सो नेक्स्ट व्हाट लेट दिस इज द सी पॉइंट, दिस सी पॉइंट, और आप चार्ज को यहाँ पे रखते हैं सेंटर पे, दिस इज सी पॉइंट। सो देन यू नीड ओनली 1 क्यूब, अनदर 1 क्यूब to in order to enclose this charge. Clear? यहाँ पे आपको एक और क्यूब चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस। सी पॉट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब्स इक्वल टू Q by epsilon naught, Gauss's law. So सिंगल के लिए क्या आ जाएगा, फॉर सिंगल दिस वुड बी Q divided by 2 epsilon naught. The answer, correct answer is 2 epsilon naught. Next, last one, midpoint of B and C. You have 2 points. This is B, this is C. अगर आपने चार्ज को इसके मिड पॉइंट पे रख दिया, B और C के दरमियान, you put the charge here at the midpoint, यहाँ पे you put charge here at the midpoint B and C, यहाँ पे आपने चार्ज रख दिया, then again for the D option the correct option would be Q by 2 epsilon naught, the same as part C, because if you change the position
ऑफ द चार्ज बॉडी, अगर आप चार्ज बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं देन फ्लक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगेन इट इज़ देन इनक्लोज बाय द टू क्यूब्स. फॉर एग्जांपल अगेन कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हम चार्ज का पोजीशन चेंज करते हैं. यूट्यूब पे कमेंट्स में क्वेश्चन था आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, अगर आप चार्ज का पोजीशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव एनी चार्ज, इट इज़ हेयर एट द सेंटर और इट इज़ हेयर, चार्ज का पोजीशन चेंज करते हैं विद इन द सेम क्लोज सरफेस एक ही है और आप उसमें चार्ज का पोजीशन चेंज करते हैं, देन देयर इज़ नो चेंज ऑन द फ्लक्स. So that is for today. We will again discuss some of the very important MCQs in our next lecture. So okay, bye.